The Jharkhand government apparently has now issued a diktat on sharing information with the ED and the CBI. What the Jharkhand government has essentially directed officials to do is that no information will be shared with any of these central agencies without a prior clearance. Let's go right across to my colleague Mukesh, who is in exclusive possession of that letter, which is in fact the diktat that has been issued. Mukesh, क्या जानकारी दे सकते हैं आप हमें? जो हेमंत सोरेन सरकार है, जो खुद हेमंत सोरेन अभी एजेंसीज के स्कैनर के अंडर हैं, उन्होंने ये डिक्टेट इशू किया है अपने ऑफिशियल्स को कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट के कोट अनकोट वेट किए बगैर. What is the legal basis of this diktat? What are you picking up? देखिए, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी जो प्रमुख सचिव हैं वंदना दादेल, उन्होंने 9 जनवरी को एक लेटर इशू किया है जो कि झारखंड के सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है. उसमें कहा है कि जो सीबीआई है, ईडी है, ये आईटी डिपार्टमेंट है, ये एजेंसियां जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये लगातार झारखंड में अलग अलग मामलों को लेकर छापेमारी कर रही हैं. लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जो तमाम अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर इस जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सीधे शेयर कर देते हैं या पूछताछ के लिए सीधे शामिल हो जाते हैं. तो उस चिट्ठी में कहा गया कि कोई भी अधिकारी सीधे तौर पर इन केंद्रीय एजेंसियों को कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेगा और ना ही पूछताछ में शामिल होगा. चिट्ठी में कहा गया है कि इस तरह से अगर कोई शामिल होता है तो उससे सरकार की जो छवि है, जो भ्रामक जानकारियां हैं, वो चली जाती हैं और कई बार गलत जानकारियां चली जाती हैं. तो चिट्ठी में कहा गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा वो मंत्रिमंडल सचिवालय के थ्रू या फिर जो वहाँ का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसके थ्रू ये जानकारी शेयर की जाएगी. अगर केंद्रीय एजेंसियां कोई भी जानकारी मांगती हैं तो पहले सरकार को बताया जाएगा कि केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो या आईटी हो या सीबीआई हो, वो ये जानकारी मांग रही हैं. उसके बाद सरकार तय करेगी कि क्या जानकारी देनी है या नहीं देनी है. तो पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड में भी सीबीआई, ईडी और जो आईटी है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सीधे तौर पर अब जानकारी मिलना मुश्किल हो जाएगा. अलग अलग मामलों में जो ईडी है वो लगातार जांच कर रही है और 2 आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है. झारखंड के सीएम को 7 बार सम्मन कर चुकी है, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं आ रहे हैं. और उसके बीच ऐसा ऑर्डर जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है. Well, it is a controversial order, and we'll try and get a reaction from the JMM spokesperson who's joining us on the broadcast, Tanuj Khatri. We also have Deshratan Nigam joining us on the broadcast. Tanuj Khatri, can you help us to understand what really is the rationale behind this order? Because it almost seems like the government there in Jharkhand has something to hide by trying to issue an order like this. If you have nothing to hide, then let officials share whatever information they need to with the central agencies. देखिए, भारत के अंदर में राज्यों को अपनी शक्तियां प्राप्त हैं और फेडरल सिस्टम में भी उसका उल्लेख है. जिस प्रकार से जो भी दस्तावेजों की मांग की जाती रही है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, उससे सरकारी कामों में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और उस सभी सरकारी काम में बाधा आती है. इसी को एहतियातन निर्णय लिया गया है कि बिना अपने वरीय पदाधिकारी को, अपने विभाग के अध्यक्ष को बताए बिना कोई आगे प्रोसीड नहीं करेगा. हम समझते हैं इसमें छुपाने की कोई बात नहीं. और जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो चुनी हुई सरकारों को, जहां उनकी सरकारें नहीं हैं, उसको परेशान करने का काम करती है, ये किसी से छुपा नहीं. All right. Deshratan Nigam, do you want to respond to that? I mean, one, can you explain to us the legal basis? And, Tanuj Khatri's justification is that the states enjoy certain powers and privileges under the federal structure, and this is just in keeping with that. Could you unmute yourself, please? Rishika, one thing is very clear: when the crime is being investigated,
nobody can interfere with the investigation, whether it is the documents that they have or any other information that they have. This is interfering with the due process of law, justice, and investigation. This cannot be done. If they have an issue, the state government has an issue of not providing, they must approach the court and take an order from there. Similarly, if the ED and CBI is aggrieved and if they are not giving any documents or information, I think the appropriate court in the state is the High Court and they must get an order. Although this step by the state government is absolutely illegal, unjustified, unconstitutional, this cannot be done. Although Jharkhand has withdrawn the general consent given to CBI, they cannot pass such orders because it is only seeking information so that the investigation can be concluded. This is in a way saying that I have done corruption, but I will not give you any information, any documents of the illegality or the corruption that I have done. Deshrata Nigam, while that is the question, while that is exactly the question that I posed to the JMM spokesperson, who's, I believe, disconnected the phone line and doesn't wish to answer any more questions, exactly the question I posed to him, that, you know, doesn't this in a certain sense just make you look guilty? If you have nothing to hide, why issue such diktats? But, you know, the opposite is also true, isn't it? Which is what he said. His response was that central agencies are being misused to, quote unquote, harass political opponents. This is all an act of political vendetta. This is a charge that has been levelled against the current government by repeated opposition parties. What do you make of that? Rishika, in fact, every accused, whether a politician or non-politician, has never come forward saying that I am guilty. Hence, the investigation is required. He is interfering with the investigation. And if he has any grievance, now when you allot the mines to yourself, that is prima facie corruption. It requires to be unearthed also. There are other issues also of the corruption. If you have any grievance in a country which is governed by the Constitution provides the grievance, redressal grievance mechanism through courts. They are not going to the court. They are even avoiding summons. 7 summons have not been responded to. Therefore, it is absolutely necessary to understand the judicial system of a country. You cannot obstruct investigation, due process of law, of justice. If you have any grievance, please go to the court, and they are not going to the court. This is bullying. This is bullying the central agencies. All right, but like you said, you know, the central agencies also have a legal recourse that is available to them. So in the event that officials working with the JMM government in Jharkhand don't actually share information, the central agencies can move courts, get orders in order to be able to obtain that information. So there is a legal recourse, there is a work around this that is in fact available, but questionable diktat there by the Jharkhand government.